Hello, students. Today I'm going to tell you a beautiful story. Once there was a wise queen named Ratnamanjuri. She possessed a vast fortune of ratnas. Ratnas matlab precious stones, and wanted to leave them all to her son Khoisnam. However, the queen was very clever. She knew that if she simply gave the treasure to her son, her 99 relatives would pester and haunt him forever out of greed. मतलब अगर रानी रत्ना मंजूरी खोइसनाम को अपना सारा ट्रेजर दे देती हैं तो 99 रिलेटिव्स जो उनके हैं वो उनके बेटे का जीना हराम कर देते। तो उन्होंने क्या किया? शी डिवाइज्ड अ ग्रैंड चैलेंज। और वो चैलेंज क्या था? इट वॉज अकॉर्डिंग टू द विल। और विल में उन्होंने लिखा, इफ ऑल 100 ऑफ यू आंसर इट एट द सेम टाइम you will share the ratnas equally. However, if you are the first one to solve the problem, you will get to keep the entire inheritance to yourself. जो मैं आपको पजल देने वाली हूँ, अगर आप सब 100 के 100 लोगों ने वो सॉल्व कर ली तो जितना भी ट्रेजर है, जितना भी रत्नाज हैं, वो सब आप सब में इक्वली बट जाएंगे। लेकिन आप में से अगर कोई भी सबसे पहले उसको सॉल्व कर गया तो वो सारा ट्रेजर, वो सारा इनहेरिटेंस उस अकेले को चला जाएगा। और उसके बाद शी इनवाइटेड कोइसनाम एंड द 99 रिलेटिव्स, मतलब 100 लोग टोटल, टू द सीक्रेट रूम कंटेनिंग 100 क्लोज्ड लॉकर्स। एक 100 क्लोज्ड लॉकर्स का एक कमरा था। वहां उन्होंने सबको बुलाया और फिर शी रेड द विल टू देम, एंड आई हैव रेड द विल फॉर यू नाउ। उसके बाद उन्होंने बुलाया अपने मिनिस्टर को और कहा, जो पजल है वो सबको समझा दीजिए। And what was the great locker toggling puzzle? The minister explained the rules of the toggling game. Toggling matlab? Toggling means if a locker is open, they close it. If it is closed, they open it. So the puzzle was, if person 1 walks down the row and opens every single locker, then person 2 comes next and toggles every second locker. Second locker matlab locker number 2, 4, 6, 8 and so on. Person 3 क्या करेगा? Person 3 toggles every third locker. मतलब locker number 3, 6, 9 and so on. और ये कंटिन्यू होता रहेगा until all 100 people have taken their turn according to their number assigned. Queen then also revealed that the lockers remaining open at the very end would reveal the code to the fortune. बहुत इंटरेस्टिंग था। While the relatives were confused, Khoisnam immediately knew which lockers would stay open. He realized the secret lay in the factors. Factors of 4 उसने calculate किया, वो है 1, 2, 4. Factors of 9 उसको समझ आया, 1, 3 और 9. Factors 25 उसने calculate किए, 1, 5, 25. Factors of 6 थे 1, 2, 3 और 6. Factors of 14 थे 1, 2, 7 and 14. तो उसको थोड़ा सा कुछ समझ आने लगा। उसने कहा, a locker is only touched by the people whose numbers are factors of that locker's number. बहुत बढ़िया। उसके बाद उसको क्या समझ आया कि जैसे कि लॉकर नंबर 6 है, लॉकर नंबर 6 कौन से लोग टच कर सकते हैं? इट विल बी टच्ड बाय पर्सन 1, 2, 3 एंड 6। आगे उसने सोचा, if a locker is only touched by the people whose numbers are factors of that locker number, then if a locker is touched an even number of times, it ends up closed. कैसे? ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज। तो जितने भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स टच होंगे वो होंगे क्लोज्ड। एंड इफ द लॉकर इज टच्ड एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, इट स्टेज ओपन। कैसे? ओपन, क्लोज, ओपन। तो मतलब जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टच हो रहे हैं वो ओपन रहेंगे और जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स टच हो रहे हैं वो क्लोज रहेंगे। इससे क्या समझ आया? अब वो वापस फैक्टर्स के पास पहुंच जाता है और फिर देखता है फैक्टर्स ऑफ 4 जो हैं वो
ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है। फैक्टर ऑफ 9 के भी ऑड है, फैक्टर्स ऑफ 25 भी ऑड है, जबकि फैक्टर ऑफ 6 इवन है और फैक्टर्स ऑफ 14 भी इवन है। इससे क्या समझ आया? While the relatives were confused, Khoisnam immediately knew which lockers would stay open. Most numbers have factors in pairs, meaning they have even number of factors. लेकिन कुछ numbers ऐसे हैं जिनके factors odd number of factors हैं. What are these? These are perfect squares. The perfect squares are unique because a square is a number multiplied by itself, like 3 into 3 is equal to 9. The partner factor is the same number, resulting in an odd number of factors. अब खोइसनाम को क्लियरली समझ आ गया कि किन नंबर्स के फैक्टर्स इवन होंगे और किन नंबर्स के फैक्टर्स ऑड होंगे. The relatives were busy toggling the lockers, and Khoisnam was doing mathematics. He was analyzing the puzzle and finding the solution without even touching the lockers. Yes, Khoisnam ने किसी लॉकर को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ मैथमेटिक्स किया. और उसे क्या समझ आया? Soon he realized that only the square number lockers, that is 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, and 100 remained open. Why? Because they have odd number of factors and these are perfect squares. Now, what does this mean? This means that the final answer must be in these numbers. Now, the Queen's puzzle had a final twist. What was the twist? The passcode was the first five locker numbers that were touched exactly twice. So, a number touched exactly twice must have two factors, that is 1 and itself. In mathematics, these are called prime numbers. So, do you know what prime numbers are? You can answer in the comment section. Also, why will lockers with these numbers be touched only twice? Khoisnam quickly identified the first prime numbers 2, 3, 5, 7, and 11. Queen Ratnamanjuri was very happy. Khoisnam had made her proud, the same way as you all make me proud. I hope you all understood the puzzle. Try making more of such puzzles and play with your friends. Keep exploring and learning. Thank you. Have a nice day.